Hi friends and viewers, I am Chef Tanzil. I make recipes from all parts of the world. Please do subscribe and hit the bell icon and don't forget to like. Thanks once again. वेलकम टू शेफ तंजिल्स किचन। आज की हमारी डिश है आलू पालक। इट्स अ नॉर्थ इंडियन डेलिकेसी। ये आप ज़रूर बना के ट्राई करना। इट विल कम्स आउट ऑसम। सो लेट्स बिगिन। Blanch and make a puree of spinach. Boil potato 2 to 3 numbers. Coriander, chili and mint का प्यूरी बना लेना। And the rest of the ingredients we need: chopped garlic, chopped onion, cumin seeds, oil to fry, turmeric powder, haldi, धनिया पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, एक नींबू का जूस, salt, green chili chop and some yogurt. Heat a pan, add oil. एक पैन में तेल गरम कर लीजिए। Add chopped garlic, चॉप लहसुन डाल देना। अब जीरा डाल देना। ऐड क्यूमिन सीड्स, चॉप ग्रीन चिली डाल दीजिए। ऐड द चॉप ग्रीन चिलीज, ऐड चॉप ऑनियंस, saute it nicely. When onions is translucent, add turmeric powder, हल्दी पाउडर डाल दीजिए। Add योगर्ट। योगर्ट को हमें फेंट के डालना है।
ऐड द सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। ऐड द बॉइल्ड पोटैटोज, ऐड द ब्लांच स्पिनिच प्यूरी, पालक की प्यूरी डाल देना। अब जो हमने धनिया, चिली और पुदीने का जो प्यूरी बनाया था वो भी डाल दीजिए। अच्छे से सौते करना। Add the remaining yogurt to it. Add dhania powder. Add black salt. Your North Indian delicacy is ready to relish. It's very easy. Anyone can make this wonderful recipe at home. चलिए अब हम अच्छे से इसको शेफ तंजिल की नज़र से प्लेटिंग करेंगे। Please subscribe, comment and like to my channel all about cooking. So be with Chef Tanzil for new and upcoming more recipes for my wonderful viewers.